Hello students, welcome back to Big Academy. In today's class, we will be discussing about the Wildlife Protection Act of 1972. Alright, so going by the name, it is an act. Now what is the meaning of an act? An act means a law, एक कानून, ठीक है, which describes that how things should be, ठीक है, it makes a law. An act means a law. So Wildlife Protection Act, going by the name only, you must be able to realize that what this act actually stands for. It is for the protection of wildlife, wild animals. ठीक है, Wildlife Protection Act. ठीक है, it is for the protection of wildlife. ठीक है, this act was passed in the year 1972. ठीक है, now what does this act do specifically? See, the wildlife in our country are at risk through many mechanisms. It can be through natural phenomena, some kind of natural calamity, poaching, industrial expansion, deforestation, cutting down of forests, in any way, clearing natural habitat. It can be anything. ठीक है, तो होता क्या है इन एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए and to protect their habitat, because if the animals are directly not destroyed, if their habitat is destroyed, it's like destroying their home. So if you destroy somebody's home, and homeless man is, or a homeless animal is equivalent to dead, today or tomorrow, more or less, the animal is going to perish. Okay, now it also establishes schedules for species protection. Okay, there are certain schedules or lists. Okay, what the act has done is, basically the act has made or differentiated the animals in different lists. जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है हमारे देश में, उनको अलग अलग लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एंड ईच लिस्ट इज नोन एज ए शेड्यूल. ठीक है, अब ये किस बेसिस पे हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटेक्शन दे नीड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल 1 ऑफर्स हाईएस्ट प्रोटेक्शन. मतलब शेड्यूल 1 में जिन जानवरों का नाम लिखा हुआ है, ये वो जानवर है जिनको सबसे ज्यादा रिस्क है. ठीक है, जिनको सबसे ज्यादा थ्रेट है, दे हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ थ्रेट एंड रिस्क. सो दीज एनिमल्स हैव बीन प्लेस्ड इन शेड्यूल 1. ठीक है, दीज एनिमल्स हैव बीन प्लेस्ड इन शेड्यूल 1. सिमिलरली शेड्यूल 2 में वो है जिनको थोड़ा कम चाहिए प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 से. ठीक है, और दूसरा, दिस एक्ट हैज क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज. ये कैसे एरियाज है? ये प्रोटेक्टेड एरियाज है. यहाँ पे एनिमल्स को, फ्लोरा फोना को ऐसे रखा गया है दैट दे विल बी प्रोटेक्टेड. ठीक है, बाहर का कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उनको हार्म नहीं कर सकता. दे आर प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड एरियाज. तो उसके अलावा इट ऑल्सो प्रोहिबिट सर्टेन थिंग्स लाइक हंटिंग एंड पोचिंग. सी वी ऑल नो इन आवर कंट्री दैट टाइगर स्किन, द राइनो हॉर्न, ठीक है, द स्किन ऑफ द राइनो, देन द आइवरी, elephant tusk, these have very high value in the black market. ठीक है, so what many people do is that for some petty money, for their to satisfy their greed, they kill these animals and their body parts are traded for high amounts of money outside. Smuggling होती है इन चीजों की. ठीक है, so hunting and poaching has been banned. ठीक है, also वाइल्ड लाइफ से आने वाली कोई भी चीज, जैसे ये टाइगर स्किन वगैरह हो गया, ठीक है, उसका कोई भी डेरिवेटिव, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ, उसका ट्रेडिंग भी बैन कर दिया गया है. ठीक है, अदर देन दैट, द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय दिस एक्ट. इस ब्यूरो का काम क्या है? दिस ब्यूरो टेक्स नोट ऑफ व्हाटएवर क्राइम इज हैपनिंग इन द कंट्री रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ. ठीक है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कंट्री में जो भी कुछ हो रहा है, इफ एनी क्राइम, इफ एनी केस अकर्स रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ दैट कम्स अंडर द वाइल्ड लाइफ, मतलब ऐसा कोई भी अगर क्राइम होता है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा, दोज क्राइम्स आर हैंडल्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, द WCCB, एंड दिस बॉडी was established under this particular act only. ठीक है, प्लस कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व का कंसेप्ट भी इसने लाया. कम्युनिटी रिजर्व क्या है? देखो, कम्युनिटी रिजर्व इज समथिंग लाइक, अब होता क्या है ना, ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है, दे लिव इन एरियाज विच आर कॉमन विद द वाइल्ड लाइफ. ठीक है, विच आर कॉमन विद द वाइल्ड लाइफ. सो इनको कम्युनिटी रिजर्व एरियाज का वो दिया गया है, ताकि बिकॉज देखो,
The tribal communities, they derive their resources from the wildlife itself. They are not like us who will go to a shopping mall or this or that. They have their own culture, their own lifestyle. Okay? And it is our duty to preserve such a lifestyle, to conserve such a lifestyle at any cost. Okay? So, because of that, such concepts have been settled. Now, if you look here, okay, in Schedule 1 and 2, there is absolute protection, like highest amount of protection. मतलब शेड्यूल 1 एंड 2 में जिन जानवरों का नाम लिखा है, अगर उनके साथ किसी ने उनका बाल भी बांका किया जाके, तो मैक्सिमम ऑफेंस या मैक्सिमम पेनल्टी माना जाता है उसको। बिकॉज शेड्यूल 1 एंड 2 में ऐसे जानवर है जो बहुत ही ज्यादा थ्रेट में है, दे आर एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। दे लाइक टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर, या फिर द वन हॉर्न राइनो इन असम, दीज आर प्लेस्ड इन शेड्यूल 1, ये इतने डेंजर में, ठीक है। एंड लास्ट आता है वर्मिन्स। वर्मिन्स क्या है? वर्मिन्स ऐसे जानवर है जिनको शेड्यूल 5 में लिस्ट किया गया है। नाउ एनिमल्स इन शेड्यूल 5, दे कैन बी हंटेड, उनकी हंटिंग अलाउड है, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। अगेन इट्स अ लॉ, ठीक है। नाउ व्हाई वाज दिस लॉ ब्रॉट इन इंडिया? इट वाज ब्रॉट फॉर environmental protection. Now see, water pollution is a very big environmental problem, ठीक है ना। We all know water pollution and air pollution, especially in today's industrial world, when effluents from factories in the form of smoke and chemicals, liquid chemicals that are thrown into the water, the rivers, this is a very rising issue, ठीक है। और ये न्यूज में रहता भी है। अगर आप देखोगे दिल्ली के यमुना की हालत क्या है, वो हम सबको पता है। Even though it's a bit better, but still the situation is really bad. If the river is full of foam at this point of time, ठीक है। You will look at the river, it will look like if you go to Delhi and if you see the river, it will look like, like, मतलब ऐसा लग रहेगा कि एक नाला बह रहा है नदी के जगह। It's that dirty because of chemical effluents. And again, if we talk of air, same example of Delhi, we all know what happens there during the winters, ठीक है। तो ये एक लेजिस्लेशन था, ये एक लॉ था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, और ये इंडिया का पहला ऐसा लॉ है जो एनवायरमेंट के लिए बना था। इज द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया। अब इसका क्या था एम? कि वाटर का क्वालिटी को मेंटेन करना है, वाटर पोल्यूशन को रेगुलेट करना है, ठीक है। एंड जहां जहां वाटर का क्वालिटी खराब हुआ है, वहां पे वाटर के क्वालिटी को दोबारा रिस्टोर करना है, ठीक है, लाइक गेट इट बैक टू नॉर्मल। अंडर दिस एक्ट, the CPCB was set up, the Central Pollution Control Board and the SPCBs। सेंट्रल CPCB पूरे देश के लिए है, और हर स्टेट में एक SPCB बनाया गया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ईच स्टेट हैज वन। क्यों बना? एनफोर्समेंट के लिए, क्योंकि इस एक्ट का अगर वायलेशन होता है, अगर कोई इस एक्ट में लिखे किसी भी कानून को वायलेट करता है, then these boards will enforce the penalties, these boards will handle those cases just like WCCB did for wildlife protection, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्रीज को अगर सीवेज एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज करने हैं, उसके लिए उनको इन बोर्ड से इस लॉ के तहत अप्रूवल लेना होता है, क्योंकि सीपीसीबी पहले स्टडी करेगा कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से अगर ज्यादा डैमेज हो रहा है, वो उस पर्टिकुलर फैक्ट्री या इंडस्ट्री को परमिशन नहीं देगी, ठीक है। ऑलराइट। एंड दूसरा, एज आई सेड, बिना कंसेंट के, बिना प्रॉपर अथॉरिटी अप्रूवल के कोई भी एफ्लुएंट पानी में डिस्पोज नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, ये बोर्ड्स को पावर देता है कि अगर इमरजेंसी हो जाए किसी जगह पे पानी को लेके, क्वालिटी को लेके, तो वो इमरजेंसी मेजर्स ले सकते हैं। ऑल्सो अगर कोई इसको वायलेट करे, तो ये बोर्ड्स को सेम पावर देते हैं टू इंपोज पेनल्टीज ऑन दी परपिट्रेटर्स, ठीक है। अगेन CPCB, if you study polity, you will know that CPCB there is something called a statutory body. A statutory body essentially means a body established by a statute. अब स्टैच्यूट का मतलब क्या होता है? द वर्ड स्टैच्यूट मीन्स अ लॉ। अगर ऐसी कोई भी बॉडी है जो एक लॉ के कारण बनी है, लाइक एक लॉ को पास करके उस पर्टिकुलर बॉडी को सेटअप किया गया है, इफ अ बॉडी इज बैक्ड बाय अ लॉ, जैसे GST Council, it is a statutory body. Why? Because it has been set up by the GST Act, the law for GST. So this particular body is a statutory body. WCCB is a statutory body. Why? Because they have been set up by a law. And when was this CPCB set up? It was set up in September 1974 under the provisions of
this particular act. Okay, so that was it. These are two very important laws from environment and ecology, also relevant in some points of polity also, you can say. Okay, and a little bit of geography as well, like water conservation and everything, biodiversity, all that. I hope it was a helpful session, helpful video for all of you. Okay, I'll see you guys in another video very soon. Until then, take care, goodbye, and Jai Hind.